Hi. Wait, one second. Tamasha 1 to 10. 10. 10? I have like so much to say about that movie, but I'm gonna roast you so much right now. Am I a geek? Yes. You're not geek, you're Welcome back to our podcast. Today we have a very special guest. Not really special, but मुझे बोलना पड़ रहा है because I've been like forced to say it. especially in the challenge, dude. हमारे पास है हमारा बहुत ही Where's अच्छा my gun? दोस्त. Where's my gun? It's a non-violent podcast. हमारे साथ है हमारा दोस्त सूरज. Suraj. This is Aditya. I am Shrazi. Thank you for coming back and watching our podcast. आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है. हम बात करेंगे alternative ending to Rockstar, Tamasha, When Harry Met Sejal, Jab We Met, and all the movies. The alternate ending being they should not have existed. Yes. I'll be defending तो इम्तियाज अली. बेसिकली क्या है हम आपको बता देते हैं. Yeah. ये है इम्तियाज अली के बहुत बड़े फैन, ये है मीडियोकर फैन, और हम बिल्कुल ही फैन नहीं हैं. हम नो ये फैन. heater. Sorry, let me correct. I am not even mediocre fan. I am just mediocre. तो बेसिकली ये है एकदम ही बॉलीवुड फैन. ये है अभी इन्होंने बॉलीवुड देखना शुरू किया है, Yeah. हम इनको डिस्कार्ड ही कर रहे हैं. Yes. हम बॉलीवुड काफी देखे हैं लेकिन हमारे ओपिनियंस बहुत हैं, जस्ट लाइक 7 other billion people. बेकार opinions, पर ठीक है. बेकार ओपिनियंस. The fight has already started, guys. Excuse me, I have logical opinions. अब आप लोग बताइएगा कि ये सही है या नहीं. Let's start with जब वी मेट. Two. Ready. First round. अब मैं आपको बता देती हूँ, जब वी मेट इसका फेवरेट मूवी है. तेरा भी Not फेवरेट favorite है? movie. I like the movie. Okay, Let's okay. actually be clear. Let's do, here. let's You do know one my thing. favorite movie. No, let's do one thing. 1 to 10. Yeah. Okay. 7. Yeah, 7.5 actually. 3. Okay. I just did not like that movie. Why? Yeah, why? So let me get to you. So जब before we met- actually do something, sorry. If this is going here versus here, I am here for showpiece. Please don't take my opinions into too much. शोपीस भी तो फिर सुंदर वाला रखना चाहिए ना हमें. Yeah, that's why it's me and not you both. You go bring mango. Yeah. Can It's- we replace you with mango? Okay, sure. So जब we met. Why 3? Why 3? That movie made no sense at all. It was now I don't have मतलब मेरे को करीना कपूर और उसके एक्टिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक्टिंग बहुत अच्छी थी. उसका कैरेक्टर मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया. वो बहुत ही इम्पल्सिव थी. ठीक है, वो बहुत ही शी हैड नो सेंसिटिविटी फॉर एनीवन अराउंड हर. उसको वो करना था जो उसको करना था विदाउट डिसरिगार्डिंग, मतलब विदाउट नहीं, विद डिसरिगार्डिंग अदर पीपल्स फीलिंग्स एंड ओपिनियंस. जब उसका मन था शी सेड ओह माय गॉड, और जब उसका मन नहीं था शी सेड Do you see the irony in so it? weird. Being a geek yourself. I am not a geek. You're a geek. If I'm a geek, shoot me. You're that's a very good thing to say. That's a very good thing. I am not a geek. Okay, पहली बात तो I am sensitive towards other people's feelings. ठीक है. दूसरी बात, the only thing I liked was her standing up to that station master. जो वो बोलता है कि चपाट लड़की मारूंगी. खुली तिजोरी जैसे होता है, उसने जो उस मोमेंट किया वो मैं भी करती कि भाई सुन तू काम से काम रख, ठीक है, अपना काम कर, वो वाला. बाकी सारा मेरे को बहुत ही उसका इम्प्रैक्टिकल कैरेक्टर लगा. ऑल्सो ठीक है, why I didn't like the movies because they showed them ending up together. A person who is so mellow with a person who is so high. भाई रियल लाइफ में ठीक है ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, लेकिन रियल लाइफ में आप इतना मेलो और इतना हाई कैसे वो जिंदगी भर काट लेंगे? हाउ डू यू इवन like do it? How मतलब not do it, Because that's the balance of life. how do you do life? Hashtag do it. They did. Okay. तुझे कैसे पता? तू गया था देखने? नहीं मैंने फिल्म Shahid and Kareena did. हाँ, that's what I meant. उनका ब्रेकअप हो गया था तब तक. नहीं They नहीं. did it and then broke. इंटरवल से पहले they were dating, इंटरवल के बाद they were not dating by the way. Okay. They had broken up. I So that was peak acting. I missed Again, that call. acting was 10 on 10, but नहीं see. okay, Life. why do you like it? Not like it, but I have a counterpoint to that कि life का ऐसे होता है कि like she brought the energy in him जो वो depressed था, he wanted to die, she literally saved his life, ठीक है. and he brought थोड़ा practicality and gave her the ground कि like तेको पागलपन करना है, इकट्ठे करते हैं, so that he brought the stability. She was being solo crazy and that's why she was seeming crazy. मतलब you know, I mean like it's Fair like enough. मैं ये कह रही हूँ, गीत का कैरेक्टर was 10 on 10 crazy all the time.
आदित्य का कैरेक्टर वाज 1/10 एनर्जी ऑल द टाइम, ठीक है, उसको उठाने के लिए आप कर सकते हो, लेकिन जिंदगी भर आप 10/10 और 1/10 कैसे चलोगे? नो उसको झटका लगा ना, आयुष्मान ने उसकी बैंड बजाई, उसको पता लगा, वो डिप्रेस हुई, शिमला का क्या ऑसम सॉन्ग हमें व्यू दिया एंड एवरीथिंग। सो लाइफ ऐसे मतलब अगर बैलेंस, उसका लाइफ बैलेंस करती है। कैरेक्टर अगर 5/10 आया हो एंड आदित्य का भी कैरेक्टर 5/10 उठा हो, तो आई अंडरस्टैंड कि भाई यस दे कैन वेरी वेल मैच ईच अदर्स एनर्जी, मैच नहीं मतलब ठीक है, इवन इफ दे आर ऑपोजिट वो चल लेंगे, लेकिन 10/10 क्रेजी एंड 1/10 एनर्जी में तो यार जिंदगी भर तो आप नहीं चलते, बिकॉज एट सम पॉइंट मैं एक बात बताऊं, एट सम पॉइंट a person like Aditya who's so mellow would be like भाई चुप हो जा, बस तू चुप हो, या तू 2 मिनट चुप हो जा, बस मुझे शांति की सांस लेने दे। एंड I know एक the बंदा, feeling. हाँ यू नो द फीलिंग बिकॉज यू आर वन गीत। You are the Geet. सेकंड, एक बंदा जो बिल्कुल हाई एनर्जी में रहता है, वो जिसको जिंदगी में एकदम फन क्रेजी एडवेंचर करना है, उसके लिए आदित्य टाइप जिंदगी भर के लिए भाई सैड एंड डिप्रेसिंग है कि भाई कभी तो कुछ कर लिया कर, कभी तो उठ के घूमने चल लिया कर, कभी तो कोई ओपिनियन रख लिया कर, कभी तो हंस लिया कर। एक कॉमेडी शो इंडिया गॉट लैटेंट देखते हुए भी अगर तेरे को हंसी नहीं आ रही है तो क्या फायदा है जिंदगी का? नहीं but आप okay, समझ रहे हो? हाँ but I just get this vibe randomly मेरे माइंड में आया कि रियल लाइफ में अर्चना पूरन सिंह वो is like you know उसका हस्बैंड का भी सेम इक्वेशन रहा होगा ना, they have been successful married for 20 years. They are divorced. No. Yes. I have no idea. Why are you looking at me? I don't know. I'm not Wikipedia, guys. They No, did it They and are broke it. separated. No, they're together. Oh, she is separated. या तो वो पुराने हस्बैंड से होगा। No, that's That's Parveen Google. Sethi has been her husband. Google it, but for 20 years, something maybe. 20 चलो years. बाद में Man. देख लेंगे। Yeah. हाँ. But नहीं, Point but- being कि like मेरे को लग रहा है कि No, film के but end- असली में we don't know if she is like that. True. On On, Kapil wait, Sharma one ji second. Wait, one second. Geet. And Geet is a real life character. Oh, who? We know Archana Puran Singh. We are presuming that she is that person because of her TV representation. Yeah. So is Geet. हाँ, मैं भी यही कह रही हूँ कि मुझे वो मूवी इसलिए नहीं पसंद आई क्योंकि मुझे वो मतलब ऐसा लगा कि मूवी के लिए ठीक है बट ऐसा होता नहीं है, मतलब आई एम वेरी उस वे में प्रैक्टिकल। See, it's Imtiaz Ali movies are a lot about evolution. जहाँ से वो start हुए थे दोनों, they definitely did not reach at the end of the movie. They grew in their own ways. Yeah, she mellowed down. Definitely. She mellowed down a little and he spruced up a मतलब you know मैं little वही नहीं कह रही था हूँ, lot. अगर वो है हाँ, तो हाँ. सही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप आदित्य हैं और अपने लाइफ में गीत ढूंढ रहे हैं जिंदगी काटने के लिए, मुझे वो इम्प्रैक्टिकल लगता है। पहले आप अपने आप को भी थोड़ा उठाइए, ध्यान साधना करिए, थोड़ा लाइफ में इंथुजियाज्म लाइए, उसके बाद आपको कोई गीत जैसी मिलेगी भी और उसको आप सस्टेन भी कर पाओगे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी देख लो भाई, तुम्हारी मर्जी है। No, genuinely another point. हमने तो though- बोल दिया है, बाकी No, तुम्हारी another point though. Let Aditya speak now. No, मेरा ना I'll tell you मेरा क्यों 7 on 10 लगा था। हाँ. ठीक है, क्योंकि मैंने ना इतना कैरेक्टर एनालिसिस बहुत Let ज्यादा नहीं। Aditya speak about Aditya. Yeah. Good one. Actually, his name is Aditya, no? I Yeah. actually forgot in the मैं तो this तब से thing. वही बोल रही हूँ। Yeah, fair enough. I liked it 7 on 10 because 7.5. because yeah, whatever the rating was doesn't matter. I liked the movie because the movie was a fun watch. If you shut your mind about the character analysis and just watch it as a Bollywood romance, it had all the elements in it. It was They were highly great. irritating. See, again, you are going purely based off of Geet's No, character. even as a movie, I found it. Let me, can I highly- finish the point, Yeah, though? yeah. I barely said Geet, the Let point. Aditya speak. No, man. Yeah, you are. No, no, His no. point might actually stand true, guys. Yeah. No. Of course, we do not like our own exact representation being portrayed on the screen. Oh my god, am I a gay? Yes. You're not geek, you are noise. Bro. Say, drop the mic and I'm out. Yeah. Your part is done. My part is done. I can Bring leave. mango. End the podcast. We have achieved what we wanted to. I'm in shock. Yeah. So my that's point- no, my Geet point- post interval. Now she's done. So. और तुम बस खड़े होकर मुझे घूरना, because that's all Aditya does. वो बेचारी इतना टाइम में वो डिप्रेस्ड है, घूम रही है, ऐसे करके वो बस उसको ऐसे घूर रहा है। Aditya in the movie is a creep, man. Creepy. That I can understand that. I'm not a creep. She's just trying to splash hands here and there to save herself. I'm not saying मैं कहाँ डूब रही हूँ।
Yeah, of course. अच्छा तुम्हें क्यों पसंद आई? नहीं मेरे को genuinely मजा आया क्योंकि it was one of the first. Now you guys know कि भाई I haven't consumed enough Bollywood until this year. So you should not have any opinion. ठीक है? नहीं नहीं बोलो. End the podcast. Like, okay, let Aditya speak. नहीं नहीं बोलो Okay. मैं तो वेट कर रही हूँ. Why do I feel like Dara Singh in that movie? कि like, you know, बोल दे. अबे तू चुप रहे, वो बोल रहा है, अब कौन जीत है? ठीक. बोलो. नहीं, you don't do this. You were doing the same thing. He's done it once. You've done it 7 times. If he did this, it would make sense also. अच्छा बोलो. अरे क्योंकि I found it कि मैंने वो one of the first Bollywood movies देखी थी and to me it had all the elements that I liked in a movie. It had good songs. Okay, the songs were nice. It was not कि there were any bad songs. कि ऐसा मेरे को जैसे अब मेरे को बहुत सारे movies में अब मेरे को होता है कि भाई नहीं इस गाने को skip करो. It is 8 minutes long. It is 12 minutes long. It's just going on and on. I liked the songs. They were well placed. ठीक है, so music wise it was good. It had some good jokey elements. ठीक है, comedic elements were fine. I enjoyed the comedic elements. दोनों ने acting actually अपने character के हिसाब से काफी अच्छी की थी. ठीक है, now उन्होंने character तो बनाया नहीं शाहिद कपूर और करीना कपूर ने. ठीक है, मैं तो उनके against नहीं मैं वो नहीं बोल रहा हूँ. I am telling why I enjoyed the movie. So character जो उनको script दिया गया था उसके हिसाब से they actually portrayed the character there. क्योंकि शाहिद कपूर we know in other movies he is not played this one typecasted role. He actually had to play according to a character which Aditya was drafted. ठीक है, तो उस हिसाब से it was nice. ठीक है, there was a romance element in it, there was a heartbreak element in it, and there was a romance element in it again, which viewers we know now that is a formula that has always worked. ठीक है, कि आप हाई 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 दिखाओगे, ड्रॉप दिखाओगे और फिर से हाई दिखाओगे because that is what gives people that उनको क्या था? rush. So I enjoyed that as a movie. It had all the elements of a romance that I liked. He had the full chart experience of it. Yeah, full chart experience भाई. मेरे को मस्त ऐसा लगा कि मैं बैठ Full कर chart experience? हाँ कि मैं Like, चाट like कर रहा हूँ. everything ना, भल्ला भी था, चटनी भी थी, तीखी दही, चटनी, सब चीज़ सेब, था. आलू, सब कुछ था. Like, Yeah, full मतलब वो उस वे में as a movie full experience था. Yeah. So my 7.5 does not come from whether it was Imtiaz Ali directing or Suraj Duseja directing it. It doesn't matter. Movie was fun. चलो next. Yeah. तमाशा. Oh Okay. yeah, what? Now- That is the name of this podcast. Oh, by the way, the name of the podcast is एक और podcast. एक और podcast. yeah. तुम्हें भी बोलना था. हाँ, मैं आया हूँ एक और podcast. चलो कंटिन्यू. और ये इस सूरज go back. ठीक है, In 15 minutes I will. तमाशा 1 to 10. 10. 10. It's my all-time favorite movie. Continue. Oh my god, I'm gonna roast you so much right now. 1 to 10. No, it has a very personal Two. significance. 1 to 10, 1. Because I can't give 0. 1 because there are elements which I like. 2 because that one song is so beautiful. With Alka Yagnik. Where do they go? वो कहाँ जाते हैं घूमने? Corsica. Corsica. Because of that, I got to know what Corsica is. That is true actually. Even my introduction So, to Corsica. 0.5 came Asterix from Comics that. was Ah. based in Corsica. Okay, but my 2 is definitely because of Alka Yagnik's Agar voice in Tum that- Saath Ho. Agar Tum Saath Ho. That Okay. song is just a masterpiece. That song is Is a masterpiece. Yeah. very good. Also, have you This, seen- oh my god, I have to tell you, this is Rockstar के बारे में अभी हम लास्ट में बात Yeah, करेंगे. Oh my god, I have like so much to say about that movie. I have a छोटा सा point about अभी तो अगर तुम साथ हो. I don't. Stats मत देना बस. नहीं कोई stats नहीं. But have you guys heard उसका ये वाला part they have broken down the layers behind that song. Yeah, There is a lot of parts. where- color palette. and हाँ कि everything. मतलब it has themes behind it. Yeah. कि जहाँ पे A.R. रहमान है ना, it's with Alka Yagnik. I think it's A.R. रहमान only. Yeah. So रहमान साहब जहाँ पे आते हैं and where Alka Yagnik comes, there is a part where A.R. रहमान का voice you can see has a lot of anxiety in it, and Alka Yagnik's voice is trying to calm it down. So it is portraying the dynamic that is going on between Deepika and Ranveer's character in real life. Yeah. Ah. So आप जब song एक बार फिर से when you guys also listen, try listening to it. You can hear the anxiety in it and the calmness in Alka Yagnik's voice. Right, okay. So this is Fair. layer behind it, and that is something that I, as a person, love it. This song was just, It's a masterpiece. This song was the only thing that carried. Yes. You should the add whole points for movie. that. Now yes. you guys can go for it. I'm done. I'll get a sandwich. हाँ जाओ. ठीक है. Why did you like it? Okay. Okay. See, do you remember the film? Of course. Okay. I watched it once. But yes.
It was so bad for me, मैं फिर से नहीं देख पाई. I've seen it everything. So जो वेद का कैरेक्टर है, जो उसका एक्सपीरियंस है ना, कि लाइक बीइंग फ्रस्ट्रेटेड इन थिंग लाइक सिंस चाइल्डहुड, नोइंग कि आई एम समथिंग एल्स, आई एम मेड फॉर समथिंग एल्स, आई एम सपोज टू डू समथिंग एल्स, बट बिकॉज ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड ऑल दैट, वो जो फ्रस्ट्रेशन उसका बंद होता है ना कि आई एम नॉट एबल टू डू इट, आई एम सपोज टू बिहेव नॉर्मली इन अ कॉर्पोरेट सेटअप एंड एवरीथिंग. आई रिलेटेड टू दैट बिकॉज आई वॉज दैट. आई हैड डन दैट. आई फ्रस्ट्रेटेड, लाइक मैंने गालियां छुपाई हुई अंदर बोलते हुए. Of course, I've been associated with Art of Living for a long time. It helped me in a way कि what he got from Tara, Deepika Padukone's character, and that freedom and everything, I got it from Art of Living, from Gurudev, like, you know, and I got it much earlier. But I still had to take my family along कि मेरी लाइफ की मूवी 2.5 घंटे में खत्म नहीं होगी कि उसने एक स्पीच दी अपने फादर को और कहता हाँ बेटा तेरे को जो करना है कर. For me, one of the things about this movie is कि I actually had to use this movie with my mother to sort of make her feel okay कि yes, I want to be a writer full time, I want to write books full time, and I want to process this. And it's like, okay, let me just complete that before you start. Even the romantic element. This is the point that even I agree to. Yeah. So even that romantic element now. One criticism that is common with the movie is कि उसमें दीपिका पादुकोण का character was very unfleshed and all she was कि उसका सिर्फ उतना से पार्ट था, she couldn't move on from him. But it's story वेद की है, story रणबीर कपूर के character है from his childhood to like. That is exactly my point. मेरा problem ही ये है कि ये story वेद की है जिसमें now every वेद out there जो कि you also agree. अच्छा नहीं पहले तो खत्म कर लिया. So the fact कि she had that 1 week with him of freedom or realizing कि oh this is who I am in core. I may be like working in my dream job. She was in a corporate setup, like, you know, for a tea factory and everything. That was a dream job. She was happily doing it, like, you know, Japan में conferences कर रही है. But at the core of it, when in a personal life, she wanted to be like him, enjoy like him. And when you get the taste of a real self and that experience with someone, you cannot move on from that. The 4 years, she tried everything. She met people, sab kuch. Like she couldn't, and she had to come back to him. Like that's a dream. Ki you have a real experience with someone, and you cannot move on from them. Come on, I ship it hard. Please move on, guys. Do not get stuck. No, maybe. You देखो, okay. तो yeah, मेरा क्या था? वेद का स्टोरी है. अगर ये वेद का स्टोरी है, ठीक है? तो पहली बात तो आई ऑल्सो अग्री, दुनिया में बहुत वेद हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो उनका नहीं मन है या वो स्टक है, दे आर नॉट हु दे आर. ठीक है, यू डोंट हैव टू वेट फॉर अ दीपिका टू गेट यू आउट ऑफ इट. पहली बात तो जो इस मूवी में बहुत ब्लेटेंटली पोर्ट्रे हुआ है कि भाई दीपिका आई, दीपिका ने उसको हेल्प किया, दीपिका रो रही है, दीपिका मर रही है, वो इतना रूड हो रहा है दीपिका के साथ, उसके बाद भी शी इज लाइक कॉडलिंग हिम एंड encouraging him and supporting him. That was like really bad treatment on Ved's part towards her. She was just trying to support him. ठीक है, उसके बाद भी उसने किया her choice whatever, and उसके बाद he could do what he wanted. ठीक है, मैं नहीं मानती है, मैं बिल्कुल नहीं मानती कि आपको कोई और चाहिए ही चाहिए खड़े होने के लिए. आपको एक सपोर्ट चाहिए होता है, ये मैं बिल्कुल मानती हूँ. आपकी लाइफ में अगर वो सपोर्ट है, बहुत सही बात है. अगर वो मतलब इट्स वेरी गुड फॉर यू, बट आई डोंट थिंक यू शुड वेट फॉर अ दीपिका लाइक पर्सन टू कम इन योर लाइफ सो दैट यू कैन स्टैंड अप, so that one day you can be like, yes, now I can be myself. Also, एक minute also, Ved had to be someone that he was not in a corporate setup. He did not have to be a douche with Deepika also. He was not himself with Deepika. He was not himself with his friends. क्यों भाई? हो जाओ. आप कॉर्सिका में एक बंदे हो सकते हो, पर आप दीपिका के साथ who is so supportive of you, उसी के साथ अगर you are not being yourself, इसका मतलब मुझे पता क्या लगता है, उसको खुद ही नहीं पता वो कौन है, उसको खुद ही नहीं पता उसको क्या चाहिए. नहीं, that's true. Okay, first of all, I have to like think कि she was her catalyst. जरूरी नहीं है कि लाइफ में हमेशा वो दीपिका के लिए वेट करो. आई जस्ट सेड कि मेरा कैटलिस्ट कोई और था. देयर हैव बीन टाइम्स लाइक यू नो, एंड आई विल से दिस ऑन द पॉडकास्ट, लाइक you my friends have been a catalyst to transition me from a bad phase to like कि last few months में, so you realize the importance of a catalyst, and that's what she was. Come by. So
हाँ, and he's back. ठीक है. Good हाँ, to see it so still going she on. was the catalyst and वो, if you remember the movie, okay, वो उसकी लाइफ में वापस आती है and now she sees him in a different setup की corporate life है and she tries to adjust with him. उसके माइंड में क्या चल रहा है, ये डॉन है, पर उसको लग रहा है कि like oh I am unhappy but she has accepted me, तो फिर like you know maybe I can come out of my shell or whatever, I am being okay. वो उसको छोड़ के जाती है कि नहीं I am in love with Don, not Ved. तब उसको झटका लगता है कि लाइक उसका प्रपोजल उसके फ्रेंड्स के सामने रिजेक्ट कर देती है. देन ही स्टार्ट्स लूजिंग इट. देन वो कहते हैं ना वो लेयर्स एंड जो उसने कंपार्टमेंटलाइज की थी अपनी लाइफ में वो ब्रेक डाउन होना शुरू उसने भी होती है. though he didn't take it in a nice way. ना ऑफ कोर्स अरे He was उसकी a पूरी sore लाइफ loser, by the way. Yeah. He was a very bad loser. Yeah, so he was pent up, frustrated, like that song कि जो होता है ना ऑटो ड्राइवर के साथ जो सॉन्ग है हम अमी से अपनी बत्तियां, like उसका पूरा चाइल्डहुड दिखाते हैं, उसकी कॉलेज की लाइफ दिखाते हैं. ही इज थ्रोइंग हिज बुक्स अराउंड कि आई डोंट वांट टू स्टडी, आई डोंट वांट टू डू दिस, एंड जस्ट बुक उठाता है, अपना रोना चुप करता है. I have been that. I have had that argument with my parents where I wanted to pursue writing full time पर कुछ नहीं है. तो I cannot say anything to them. I have been that guy जो बाथरूम में जाके आधा घंटा रोया है और बाहर आके हाँ it's okay. I'm going back to my corporate job. I've done that. I हाँ. understand. So वो pent up frustration मेरा कहीं और निकला. I had yoga, I had spirituality. That guy had nothing. So I can like sort of empathize. So what I am saying is, ठीक है, कि पहली बात तो वेद का पूरा, of course it's a Bollywood movie, they will show an idealistic thing, Yeah. but मेरे हिसाब से ना movies are very influential also. तो एक चीज ये वेद वाली स्टोरी से मेरे को ये हुआ कि हाँ हम सब पेंट अप हैं, बहुत लोग हैं मतलब, ठीक है. इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे लोगों के साथ पहली बात तो रूड रहो. दूसरी बात, अगर आपकी लाइफ में कुछ खराब हो रहा है तो सोल लूजर बनने की कोई जरूरत नहीं है. तमाचा पड़ेगा और फिर तमाशा बनेगा, ठीक है. गीता जी. हर टाइम आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मेरे लाइफ में भी कोई दीपिका आएगी मुझे उठाने. अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप सही में, जैसे सूरज को है मेडिटेशन है, या आप अपने हॉबी करिए. देखो, वन मोर थिंग आई वांट टू से, नॉट एवरीवन कैन डू देयर पैशन एज अ करियर. नॉट एवरीवन कैन डू देयर हॉबी एज अ करियर, ठीक है. ये एक्सेप्टेंस आना भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है भाई. तुम्हारे फैमिली को पैसा चाहिए, दे आर डिपेंडेंट ऑन यू, या मे बी देयर आर सम सर्कमस्टेंसेस वेयर राइट नाउ यू हैव टू वर्क. accept it. Maybe side में you take up a hobby, take up an activity, do some volunteering, do something that you like. कि जैसे आपने suppose you like acting, जैसे वेद को direction and acting and storytelling पसंद है. आप इतने gigs हैं, open gigs में चले जाओ, आप theaters में चले जाओ, आप अपना story लिखो. YouTube है अब तो, Instagram है, सोशल मीडिया, मतलब आप ये करो ना. आप अटके मत रहो कि मैं अपनी जिंदगी जी नहीं पा रहा या जी नहीं पा रही क्योंकि मुझे अलाउ नहीं किया जा रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा क्योंकि मुझे अलाउ नहीं किया जा रहा. मेरे लाइफ में कब कैटलिस्ट आएगा, मेरे लाइफ में कब कैटलिस्ट आएगा. मैं आपको एक बात बताऊं, सच में हमारे लाइफ के कैटलिस्ट ना हम खुद होते हैं. जब तक तुम्हारा मन नहीं करेगा ना उससे बाहर आने का, तब तक मैं कितना ही तुमको प्रोवोक या ट्रिगर करूं, तुम बाहर नहीं. But that is real life ना. I get it with the movie. In some ways that movie was a catalyst for me. Yes, fair enough. मैं क्यों बोल रही हूँ it's influential is because a lot of people will never wake up because they are waiting for the Deepika to. Yeah, that's true. वो please don't. Take inspiration from art, from people. I've sorted from them. Like कुछ भी, but get out, get moving on. Yeah. Like take charge. You have one life. इतनी सी जिंदगी है यार, इतनी सी. अगर हम घुट के ही जीते रहे, फायदा क्या है? ठीक है, and you'll be hurting other people around you who love you. Also, भाई, your parents are not allowing you to do something that you want. Do it as a hobby. जब तक तुम अपने पैरों पे खड़े नहीं होते और तुम बोल नहीं देते कि भाई अब मैं ये करूंगा या ये करूंगी. Some marriage issue है, sort it out. Don't be like मैं घुट रही हूँ. भाई, I genuinely feel, और ऊपर से दीपिका का कैरेक्टर, if you have met someone for the first time and you cannot move on, please move on. Please move on. भाई, वो कोर्सेका में डॉन था, यहाँ पे वेद है. तुम डॉन के पीछे हो, अपनी जिंदगी तुमने 4 साल अटका रखी है, तुम मूव ऑन नहीं कर रहे, तुम और 8 साल उसके पीछे हो. ये क्या है यार? सच्चा प्यार ही नहीं जानते. सच्चा प्यार हम नहीं जानते, हमने तो प्यार किया ही नहीं है, हम तो कल ही पैदा हुए हैं. भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल इस मूवी से ही समझ आ जाता है, पीपल आर नॉट हु दे शो यू.
दे आर नॉट. वो डॉन से प्यार की, वो तो वो बंदा था भी नहीं, एक मिनट, Yeah. और वो मूव ऑन ही नहीं कर पा रही है. Sorry, Aditya. No, I'm just trying to ask one question though. Yeah. Because again, I didn't have too much opinion about this film from the get-go. But Now he has. I'm still asking question because you guys have very strong opinions and it's very visible. So मेरे को ये point था, does it represent real life though? Is it maybe was it Imtiaz Ali's attempt to portray real life? Bhai, there are so many people who meet people and are not able to move on. There are 7 billion people on this planet. तुम कैसे move on नहीं कर रहे यार? तुम एक बार मिलो. I understand if you meet, if you have a relationship, if you have met 2-3 times and you're like नहीं मेरा इसके साथ बहुत special connection है, मैं नहीं move on कर पा रही. Yeah, I want someone like this only. One time you are met in a foreign country, you don't even know the person, that person has lied, that person has not told you who they actually are, they have no interest in you, you're not able to move on. This is what Have you I guys want to watched share. the before trilogy? Come on, okay. guys. She has not, well, we'll move on to Rockstar now, but she has not moved on from what she felt when she was with him. People move on from people very easily. What they don't move on from are the feelings that they feel with that person. समझ रहे हो ना? मैं समझ रही हाँ. but you are complete in your own. You don't need someone else to make you feel special. And if you have felt a connection with someone, लेकिन for some reason भाई नहीं हुआ है, नहीं हो पा रहा, भाई आगे बढ़ो. True. Guys, at the end of the day, I think both the points are very valid. नहीं सिर्फ I have to Both the say- points are very valid because Also, no one Suraj's did experience it. is very subjective. So he will of course have a much higher degree of affinity to the film than you will. क्योंकि इसका I also have this thing. No, भाई, But Tarak, nahin, wait, क्या? okay. But I have to say this statistic thing for you. You know, this week is the 9th year anniversary of Tamasha. Actually. it should have been 0 years. Also, one moment, girls and boys actually. If your partner is not treating you right, Yeah. and you have tried to help them, and you have tried to help them, and you have tried to help them, फालतू में अपनी जिंदगी उनके पीछे खराब करने की कोई जरूरत नहीं है. You help them, you move on. वो अगर रो रहे हैं, थोड़ा उन्हें रोने दो. शायद वो रो के ही जब निकल जाएगा वो उससे उठ जाएंगे, लेकिन आप उनके साथ बैठ के मत रो. That's what happened in the movie actually. That's what happened in the movie, and that really pissed me off. कि भाई, you have a life, you have a connection, you should definitely help him, you should definitely, support him, but you don't need to sit with him and cry with him. You don't need to do But that. she left ना, वो ठीक होकर आया उसके पास. Okay, let's move on to Rockstar. I think this is just going to keep going in circles. Oh my god, yes. We need to move on So, from here. So Rockstar. third movie of the day, I Rockstar. have so many thoughts about it. The As only if she did reason- not about the other two. Yeah, tell us, Geet, what did you The think? only reason why Rockstar was a success was because of its album. The story. The album is sucked. bloody insane. Actually. One of the best albums that Indian cinema has ever created. The Yeah. album is 100 It's on 10. 100 on 10. Yeah. The I think that is movie- one thing that we can unanimously Yeah, agree yes, on. Yes. Yeah. The movie Outstanding is album. 0 on 10 on a scale of 1 to 10. See, all that movie had was two I'm things. so sorry, Pranjal, but it's true. No, that movie only had two things. Did you One, like the movie? Rated 1 to 10. Four. Four You and a also half. didn't like it. No, okay, It's a I very difficult tell movie you. to like, honestly. I think it's a very specific set Yeah, of Why? crowd. yeah. It's a cult. No, that's right. It's a There's cult a for a reason. following. And there's a reason why it's a person- cultish movie, I'll right? tell you this personal experience of mine जो मेरे brother और क्या कहते हैं cousin sister के साथ हुआ. She's a bit elder, married and everything. So movie देखी again इम्तियाज Can we continue? हाँ, हाँ. So Go ahead. इम्तियाज अली मूवीज मैं अपनी फैमिली को लेके जाता हूँ और तमाशे के बाद मेरे को बहुत झाड़ पड़ी थी तो मैं उनको नहीं लेके गया उसके बाद कोई मूवी मैं भी बच गया उसके बाद की मूवीज इम्तियाज अली वाली मूवीज इतनी देखने वाली नहीं थी सो बट रॉकस्टार का था कि आई टुक माय ब्रदर एंड फैमिली माय ब्रदर हेटेड इट दिस इज 2011 लिसन ओके नहीं, मैं बोल नहीं रही, मैं हाँ बता हाँ रही हूँ. सो 2011 ही इज 19 19 और 20 मैं उसे लेकर गया हूँ उसे देखिए उसको बिल्कुल पसंद नहीं आई है एंड ऐसे हम फैमिली गैदरिंग में बैठे हैं हमारी मासी कहती रॉकस्टार वाज सच एन अमेजिंग फिल्म तो कहता है कितनी बेकार आई वाज साइलेंट लाइक कितनी बेकार एंड दे आर आर्ग्यूइंग व्हाट वी वर डूइंग दे आर आर्ग्यूइंग एंड देन मासी जस्ट लेफ्ट इट विद दिस कि देखो जब प्यार होगा ना तेरे को पता लगेगा तो फिर मैटर इज क्लोज्ड उस मूवी में किसी को किसी से प्यार नहीं हुआ था by the way. अरे जुनून वाला व्हाटएवर द थिंग कट टू 2015 हाँ अगेन वी आर सिटिंग इन अ फैमिली गैदरिंग एंड एकदम से मेरा भाई और मासी सामने उनको बोलता है
you know, Masi, last 1 year में I've gone through it, you know, relationship, broken up and everything. I agree with you, Rockstar is the best film. I don't see it. That I don't know how. They were that, like, you know, that just came. they related with the okay. I'll tell you. Yeah, what did he like? relate? Oh, no, I did not like it, but I understand just from my talking to my brother because I had to sort him out at that time. वो मेरे को मलेशिया से कॉल करता था रोते हुए और मेरे को सॉर्ट आउट करना पड़ा. So there is a and that is a theme in इम्तियाज अली movies कि he depicts the frustration of people जो ना बहुत फेकरी कर रहे हैं, अगर रिलेशनशिप है कुछ भी करियर है बहुत ऊपर से हैं. तो फिर ना लोगों ने ना प्यार में वो इंटेंसिटी 100% नहीं देखी है, वो जुनून नहीं देखा है कि आई डोंट केयर अबाउट माई सेल्फ, आई डोंट केयर अबाउट द वर्ल्ड एंड यू नो वो जो उनकी पेंट अप फीलिंग्स होती है ना कि ओ हमें सोसाइटी एंड ऑल दैट की वजह से दबा के रखना पड़ता है. वाइकेरियसली इन इम्तियाज अली मूवीज वी गेट टू लिव देम. अगर हम है कि हम थोड़े मेलो है पर हमारे अंदर गीत है ना, वी लाइक गीत. नहीं पर सूरज रॉकस्टार में आई वांट टू आस्क जस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम पीपल. Why was he angry? Yeah, I actually don't understand that. What Why was he the so? reason for his anger? Was it like a natural that he's a frustrated, naturally He wasn't. angry because he No, wasn't? yeah, yeah. Because he wasn't. उसको सिंगर बनना था, वो बन गया. बन गया. हाँ. उसका कोई ऐसा उसको हार्ट ब्रेक चाहिए था. he got it. ऐसा कोई हार्ट ब्रेक भी नहीं था. By the way, he didn't fall in love. That girl was supposed to get married. He just मतलब if you have a crush on someone who's getting married, then it's on you first of all. Yeah. And also it's a crush. You don't just love someone ऐसे. ठीक है. Second, she after like a few years when he's angry, when he's like she's like now left her husband, she's cheating. That is accepted. Cheating is accepted now suddenly in Rockstar. ठीक है. And फिर उसको घर से निकाल दिया, वो दरगाह गया. Suddenly वो गुस्सा हो गया दरगाह में जाके. नहीं मतलब हुआ क्या? Like No, the emotions don't have a trajectory, and you Yeah, can't deny yeah, it. yeah. The emotions have no head or tail. over It there. had the worst screenplay कि like you know तुम क्या आगे this is Memento वो like Nolan का Nolan आगे वाला. पीछे जा रहा है पीछे जा रहा है. Screenplay was sucky कि like you know where is the direction I for don't this? It was understand just why he was No, angry. also it is not a great representation of human emotions. Not about just the trajectory of कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, first नहीं, forward. पता नहीं, it's a very good representation. You know why? You want something, you get it, then you're not happy with what you wanted, and then you're like, oh shit, मुझे तो So इससे the भी खुशी नहीं मिल रही है. theme, yes. Theme, So, yes. वही, तो मुझे तो इससे भी खुशी नहीं मिल रही जो तो मुझे हम और चाहिए गुस्सा था. होंगे. तो अब हम गुस्सा होंगे क्योंकि हमारे पास अब और कोई इमोशन ही नहीं है हाँ, इमोट करने को. yes. भाई तुमको अगर म्यूजिक इंडस्ट्री नहीं अच्छी लग रही, छोड़ दो. तुमको वो भी नहीं करना, तुमको गुस्सा भी होना नहीं, जो चाहिए वो तो आपको मिल गया ना. अब क्या? अगेन वो आई थिंक स्क्रीनप्ले में प्रॉब्लम था. जब वो नहीं थी तभी वो गुस्सा था और whatever health problem she had जिसकी वजह से she died और in a coma और आत्मा बन गई. आत्मा. Cancer. Whatever the last She had thing. blood cancer. हाँ. So फिर he again lost her ना. तो फिर वो he for a very Right, brief then time- you get angry. and he did. No, then you get the नहीं, whole. the whole movie was angry. हाँ. So okay. So whatever the foreign country में वो थे इकट्ठे थे. She chooses. Prague, no? She, Yeah, Prague. हाँ हाँ. She discards him, chooses her husband and everything. Then he goes back angry. फिर एकदम से लाइफ में वापस आती है. Oh, she's divorced. She's separated. Dude, Like, if you have such volatile emotions about your life, you Ranbir genuinely Kapoor. no, you genuinely need to meditate. And Yeah. सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि we talk about meditation a lot, but you can't be this volatile. Yeah. तुमको You can't subject other people to this तुमको सिंगर volatility. बनना था, तुम बन गए. तुमको पैसा चाहिए था, तुमको मिल गया. तुमको हार्ट ब्रेक चाहिए था so that you can feel that emotion, तुमको मिल गया. पहली बात तो एक बंदी जो शादी करने जा रही है, जो बहुत क्लियर है कि मेरी शादी तो उसी से ही होगी, तो प्यार मत करना या जो भी, तुम उससे क्यों प्यार कर रहे हो, ये तो तुम्हारी बेवकूफी है. उसके बाद वो अपने हस्बैंड को छोड़ दिया. Please don't do that. It's cheating is not. You get a divorce, then Yeah. you come. ठीक है? Then उसके बाद चलो जो भी Show me हुआ, a divorce paper. she died again. Fair enough, sadness. Then you're like नादान परिंदे. Fair enough. You are. वो इमोशन मुझे सही लगा आपका. बाकी आपका जो इमोशन था ना, आपको खुद ही नहीं पता आपको क्या चाहिए. आपको खुद ही Basically, नहीं पता. more or less, it's more of एक तो misplaced emotion. Second, it's almost a representation of lost identity. Like he's Also selfish. a lot of Yeah, selfishness. You're so selfish. But because man. you are He's a so, rock star, you're he's so, supposed to be. that's what they're trying to say. He's a rock star. He's only self-absorbed. He Yeah. started selfish. He wanted to become a musician, so he went to
Nargis Fakhri and be like, "Hey, मेरे दोस्त बोलेंगे, Yeah, तो मारेंगे खिंचा के." But to be very honest, Nargis Non-biased. Fakhri looks very pretty in the movie. Fair enough. That was she a does joke. look, Yeah, she That looks was- very beautiful, like naturally very I beautiful. bought 2-3 Kashmiri kurtas Yeah, just because bhai, of that movie. when she wore that with that Yeah. जो cap वाला Yeah, part है, yeah, yeah. bhai, मैंने outstanding. तो खरीद लिया. मतलब just Like people say कि उसकी एक्टिंग इतनी बेकार थी जिससे रणबीर की एक्टिंग और ज्यादा अच्छी लगती है in Acting में comparison. मैं नहीं जा रही, वो लोग acting to be honest, acting wise, Ranbir Kapoor did a very good job. Yeah, You Yeah, can't who deny did it. Ranbir Kapoor play Ranbir Kapoor? I just said Ranbir Kapoor. Yeah, Hashtag in the Ranbir. movie. It was him. Yeah. He's like, oh, he gets these super duper hits playing like characters where we think it's like in like Animal, Yeah. Barfi. See, the thing is, Barfi is actually his best role. Yeah. We'll come to that later on, but Barfi is In a actually separate podcast. Yeah, Barfi is his best role. Yeah. the thing about these movies is, it's honestly promoting volatile emotions. Yeah. All three of them. ठीक है? Volatile emotions, and मेरे हिसाब से बहुत humans के होते हैं. हम every one of us goes through a lot of emotions up and down and all. I just think we need to get control of them, Yeah. and I think मतलब भाई meditation can help. No, true. आप एक हो गया कि आपका volatile emotion हो गया. I हाँ. think don't enable you doing it at the cost of anybody. हाँ. Yeah. At the cost of anybody. Yeah, you don't आप have to अपने wait cost पे for- कर रहे हो ना, Yeah. that is one thing. Yeah. आप किसी के भी cost पे कर दो ना. Including your mummy papa. Including- Bhai, they are Yeah. also other people. Hi, yeah, you can't be doing this Yeah. at the cost of whoever bloody comes around you. And it's So don't do that. we are in 20, we're almost in 2025. Aaj it's so like in thing to go for meditation and everything. It's in thing to go for therapy to ask Please for do it. help. Please do Like, it. it's been so normalized कि like जिनको चाहिए नहीं वो भी help मांग रहे हैं. So if you need it, just ask. man. Go for it. And honestly, just be satisfied. आपको जो चाहिए ना, enjoy that thing. आपके Yeah. dream में bucket list है ना, आपको Coldplay जाना है ना, Coldplay का ticket मिल गया ना, उसके बाद से- be happy man. नहीं है तो contact us. We have Yeah. 2 tickets. Plug in. Yeah. No, but genuinely just be happy, enjoy that. नहीं तो आप ना वहाँ भी जाके सोच रहे हो कि Coldplay के concert में चले गए और हम यही सोच रहे हैं कि यार Coldplay का concert तो आ गए, but काश हम चेस्टर बेनिंगटन का Linkin Park का concert भी देख सकते. भाई, वो तो अब नहीं हो सकता. वो तो नहीं, possible again, है. I'm sad, but just That is you- exactly. आपको कार चाहिए, कार मिल जाती है. अरे नहीं, बड़ी कार चाहिए. बड़ी कार हो जाती है यार, नहीं, Mercedes बहुत हो जाती है यार, Mercedes होती तो BMW चाहिए Oh यार. my God. Guys, Don't postpone your happiness. कि like, keep that dream, हाँ. but enjoy what you have right now. Yeah. ना. Yeah. सही में. और इतना गुस्से से जिंदगी जीने का कोई फायदा नहीं है. हाँ. legit इतनी सी जिंदगी है. पूरे Yeah. टाइम सही अगर में, sad सही में, और सही में. गुस्सा रहें, किसी और को चोट पहुंचाएं, उसका कोई फायदा नहीं है. सबका So तमाशा बनाने का movies- जरूरत नहीं है. सबका तमाशा बनाने का जरूरत नहीं है. आप रॉक स्टार खुद में हैं. Yeah. So जब we meet, जब we meet, You'll be happy. I hope you're a happy person. नहीं, also मतलब मैं कह रही हूँ, movies are separate. They are a thing to enjoy. They are a Yeah. thing to not associate yourself with ज़्यादा. मतलब they are a thing on screen. Please know that they are something in an artificial world. it's full fiction. Man. It's fiction. It is not your life. Yes. Your life is your life. Unless in you're watching your Dhoom. hands, in your hands, and in your control. Please take control of your life. Dhoom is real. Yeah. Which one? Dhoom 2. Okay. Oh, Aryan. इसी बात पे हम ठीक है, sir. podcast end करते हैं. Because why not? Because You out. why